টপচেম সিমেন্টৰ বিশেষ চকু পৰীক্ষা শিবিৰ কাইলৈৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব গ্ৰামীণ চকু স্ক্ৰিনিং শিবিৰ বিনামূলীয়া চকু পৰীক্ষাৰ লগতে কৰা হ'ব সানি পৰা চকুৰ অস্ত্ৰোপচাৰো দৰং উদালগুৰি বৰপেটা আৰু কামৰূপ জিলাত হ'ব এই শিবিৰ আই ডাক্টৰছ এণ্ড আই ক্লিনিক এণ্ড সাৰ্জাৰী চেণ্টাৰ সহযোগত এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব টপচেম সিমেন্ট প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰি আহিছে বিনামূলীয়া চকু পৰীক্ষা শিবিৰৰ সামাজিক বিকাশত টপচেম সিমেন্ট সদায় দায়বদ্ধ বুলি মন্তব্য কৰিছে অধ্যক্ষ ডক্টৰ অনিল কাপুৰে के साथ हम लोग collaborate करके we are doing this camp and where we are also planning to do more than between 40 to 50 surgeries and totally free of cost and we have started this since 2018 and till now we have also completed हम लोगों ने कम से कम 200 के ऊपर हम लोगों ने सर्जरियाँ कंप्लीट कर दी है तो हम आशा करते हैं कि दिस इज़ टॉपसेम जो बिलीव करता है कि हमें सोसाइटी के लिए करना है तो हर साल हम लोग करते हैं और इस साल भी उसी जोश के साथ हम लोग कर रहे हैं और वी विल लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यू दिस एक्टिविटी विच हेल्प्स द सोसाइटी वी थैंक डॉक्टर बिंदु गोयल फॉर कमिंग फॉरवर्ड and giving us this opportunity to complete this exercise. Normally like we go to the tea gardens, wahan pe they have their own hospital there. Supposing you have this mass bath belt. So 8 gardens are quite nearby, 7 I think. So all the patients get covered in that. So like this we'll keep on doing and sometimes we have the coordinators also. Like we may not need to do the camp also, they have the patients already with them. Local NGO hota hai, there are many people who are working in the field for this cause only. So we just talk to them, we tell them ki we need to do the surgeries. They say ki we have ma'am 15 cases which were already screened in some other camp but they didn't take the patients, so we bring those patients and operate them. Camp is open to everybody. It is not like we'll say ki we'll only see the cataract patients. Patients can be anyone, any patient can walk in, but out of those whosoever has that problem, we'll be screening that and shortlisting them basically. টপচেম সিমেন্টৰ বিশেষ চকু পৰীক্ষা শিবিৰ কাইলৈৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব গ্ৰামীণ চকু স্ক্ৰিনিং শিবিৰ বিনামূলীয়া চকু পৰীক্ষাৰ লগতে কৰা হ'ব সানি পৰা চকুৰ অস্ত্ৰোপচাৰো দৰং উদালগুৰি বৰপেটা আৰু কামৰূপ জিলাত হ'ব এই শিবিৰ আই ডাক্টৰছ এণ্ড আই ক্লিনিক এণ্ড সাৰ্জাৰী চেণ্টাৰ সহযোগত এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব টপচেম সিমেন্ট প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰি আহিছে বিনামূলীয়া চকু পৰীক্ষা শিবিৰৰ সামাজিক বিকাশত টপচেম সিমেন্ট সদায় দায়বদ্ধ বুলি মন্তব্য কৰিছে অধ্যক্ষ ডক্টৰ অনিল কাপুৰে के साथ हम लोग collaborate करके we are doing this camp and where we are also planning to do more than between 40 to 50 surgeries and totally free of cost and we have started this since 2018 and till now we have also completed हम लोगों ने कम से कम 200 के ऊपर हम लोगों ने सर्जरियाँ कंप्लीट कर दी है तो हम आशा करते हैं कि दिस इज़ टॉपसेम जो बिलीव करता है कि हमें सोसाइटी के लिए करना है तो हर साल हम लोग करते हैं और इस साल भी उसी जोश के साथ हम लोग कर रहे हैं और वी विल लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यू दिस एक्टिविटी विच हेल्प्स द सोसाइटी वी थैंक डॉक्टर बिंदु गोयल फॉर कमिंग फॉरवर्ड and giving us this opportunity to complete this exercise. Normally like we go to the tea gardens, wahan pe they have their own hospital there. Supposing you have this mass bath belt. So 8 gardens are quite nearby, 7 I think. So all the patients get covered in that. So like this we'll keep on doing and sometimes we have the coordinators also. Like we may not need to do the camp also, they have the patients already with them. Local NGO hota hai, there are many people who are working in the field for this cause only. So we just talk to them, we tell them ki we need to do the surgeries. They say ki we have ma'am 15 cases which were already screened in some other camp but they didn't take the patients, so we bring those patients and operate them. Camp is open to everybody. It is not like we'll say ki we'll only see the cataract patients. Patients can be anyone, any patient can walk in, but out of those whosoever has that problem, we'll be screening that and shortlisting them basically.